It's difficult to understand the perspective of the other person. When you are a son, you don't understand the perspective of your father. When you become the father, it's too late. That's the thing. That's why maybe listening to somebody like me might help. Your papa will not have so much patience with you. He's your father. My father didn't have much patience with me. He used to get angry easily, start shouting. Okay. That's what he did. And I responded in the same way. That's how some children respond. Papa shouts, you shout back, you know, and nothing works. Communication fails. When two people are shouting, there is no communication. Mummy gets annoyed. She starts getting nervous, that her son is arguing with her husband. Her husband is scolding her son, and she feels really most uncomfortable. So somebody like me can be of good use, because I'll tell you the perspective of the father, and you guys know your own perspective, and I can relate to your perspective. I remember how I felt as a son. I always thought I was right. You guys have not done much. I have such huge, what can I say, regrets. My father didn't want to sell this piece of land that is next to our house. I convinced him we should sell it. I can't believe it. I did that. My father was not willing. My uncle was pressurizing us to sell that piece of land. My father said, no way, no selling land. We don't have much land left. If there is a small piece left here, I'm not going to sell it. My father was very prudent. Prudent means a wise man who can see what will happen in the future. Okay. Prudent person is wise. He knows what will happen in the future. Now I have to accept it. When I was young and my papa was alive, I didn't accept that he was wise. Okay. But I realize now he was always right about these things, about what the decision should be. He said, don't sell piece of land. If he wants money, give him money some other way, but don't sell the land. And I didn't only convince him to sell the land, I also spent the whole money that we got. So I was not a very good son either. Okay, I'm telling you. ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा आपके सामने, यार हम तो बहुत अच्छे थे. I was more like you guys, आपसे भी बुरे थे शायद हम, because मैंने बहुत बर्बाद कराया है, बहुत बुरा कराया है, like, लेकिन I'm left with regrets only इस मामले में about my dad. Okay, and can do nothing about it. चलो, लर्न अ लेसन एंड मूव ऑन. तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना सब लोग अपने पिता को. ठीक है, वो अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बट इट डजंट मीन कि वो गलत है. Let's look at the text, the book. Yesterday we were talking about that man who went to the Beatles concert, and now he's talking to his grandson about it. अरसलान, थोड़ी चीजें मुश्किल लगेंगी शुरू में, हो सकता है ज्यादा समझ ना आए, लेकिन पेशेंस की दरकार है बेटा. ठीक है, आपसे ये भी नहीं करेंगे कि खड़ा करके बीच में सबके सामने एम्बैरेस करेंगे हम आपको, वो नहीं करेंगे. आप सिर्फ हमें अपना अटेंशन देते रहिए. ठीक है, आप हमको एक खूबसूरत लड़की समझिए. ठीक है, और मेरी तरफ गौर से देखते रहिए. राइट, हालांकि देखने में कहीं से वो सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी. ओके. ओके. So everybody has finished their homework? All right. Exercise 6 and 7 both. I will start with something easy. I will start with exercise 7. 7 is easy, guys, right? You have to match sentences in A and sentences in B. So let's do it. The concert was boring. So I left before the end. Now I would like to go to Arsalan. अरसलान बेटा, ये जो सेंटेंस मैंने अभी पढ़ा वो सामने किताब में है क्या आपके? दिख रहा है?
The concert was boring, so I left before the end. क्या आपको इसका अंदाजा लगा बेटा? मैंने जो सेंटेंस पढ़ा है आपके सामने है ना, वो इसका मतलब कुछ दिमाग में आ रहा है कि कुछ बोला गया है? क्या बोला गया बेटा? नहीं बेटा, वो उसके बाद नहीं, मतलब कि जो मैंने अभी बोला है, द कॉन्सर्ट वॉज बोरिंग सो आई लेफ्ट बिफोर द एंड। तो आपको पता चला क्या मैंने बोला? नहीं बता सकते हिंदी में आप मुझे? नहीं, मैं बताता हूँ। द कॉन्सर्ट वॉज बोरिंग। कॉन्सर्ट इज अ प्रोग्राम, a music program, right? Where a performer is performing on the stage and everybody is watching live. That is called a concert. Okay. Yeah, concert. C-O-N-C-E-R-T. Concert. Say the word concert. The concert was boring. So I left before the end. Concert कैसा था? Boring था। तो हम क्या किए? I left before the end. है ना, खत्म होने से पहले ही चले आए। I left before the end. Okay. The class was boring. So I left before the end. Okay. बाद में टीचर ने फिर आपका लेफ्ट किया, राइट किया। बीच से क्यों गया रे? नहीं, ऑनलाइन क्लास में चले जाते बच्चे। इफ द क्लास इज बोरिंग दे जस्ट लीव द क्लास ना। बाद में कहते हैं सर नेटवर्क प्रॉब्लम, ये वो, राइट? एंड यू कैन डू नथिंग। I was, I prefer this physical class because it's effortless for me. I'm sitting in front of you. I don't feel like I'm working. But when I'm in online class, I feel like I'm working. That's the biggest difference. In a physical class like this, you guys are, no matter how many people are sitting here, 100 बैठे हो, 150 बैठे हो, मुझे कभी नहीं लगेगा मैं पढ़ा रहा हूँ. I feel like I'm talking to you. और आप में से, ठीक है, I will have to change my sitting arrangement a little bit because some of you can't see me. Galileo had a very big chair. उसके स्टूडेंट्स ने बनाया था, बहुत ऊंचा, ओके, हाई चेयर, ठीक है? तो मेरे लिए तुम लोग बनवा दोगे in this corner? Okay, I will climb the stairs, sit there, and look at you and talk to you from there. Fine. And everybody can look at me. Right now, it's a little difficult because my seat arrangement is not very nice. So yeah, we are going to make a nice chair आप लोग की मदद से, क्योंकि मुझे ये नहीं कहना मैंने अपनी चेयर ऊंची बनाई, मेरे स्टूडेंट्स ने बनाई, just like Galileo. Okay, did you know this about Galileo? Yeah. Okay. I actually thought about it maybe 6-7 months ago that there should be a chair which is higher, not like this kind of chair, at least this high, so that I can sit here and my students can have a direct eye contact with me. So very soon, maybe. Okay. And more plastic chairs for you guys, right? Okay. So, beta, the concert was boring, so I left before the end. और भी ऐसी वजह हो सकती है, बहुत सी चीजें, right? The movie was boring, so I didn't watch the whole of it. I didn't watch the whole film. I left. If I was at the cinema, I left. Have you ever left a cinema in the middle at the cinema hall? The most, I know. That's why I said this. Because you pay the money, you buy the ticket with money. So sometimes you say, bhai, paisa laga hai. So you want to stay there until the end. But there are two movies that I will say where they challenged me, really badly. Ki, bhai, tu reh sakta hai kya is cinema hall mein puri film tak? Those movies were so bad. I slept actually in both the films. I normally don't sleep, okay, but I slept at the cinema. One was Chor Machaye Shor, Bobby Deol double role. Oh my goodness. I can't believe I went to that cinema. That earlier, when I was younger, I used to go to the movies very frequently. Every week, at least one, sometimes twice. If a new movie came, I had to watch it. I was a movie buff. I was a, कुछ अंदाजा लग गया? बफ किसको बोलेंगे? जो उसको पसंद करता हो, अंदाजा लगा लो, क्योंकि मैंने इसके पहले इतनी सारी बात बताई, फिर मैंने कहा आई वाज अ मूवी बफ. ओके, तो अगर आप बोलेंगे मैं क्रिकेट बफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? You just love it, right? Okay. So that was one movie, and the other movie was with Ranveer Kapoor
and Rishi Kapoor and Neetu Kapoor were also in that film. In the they were the police officers, and Ranveer Kapoor was a thief, I guess. So the whole family was there in the movie. Such a boring film, I remember. I watched that film with my wife. She laughed. She has a very, simplistic sense of humor, and she enjoys even boring movies. I don't know. I watch the movies just to watch her laugh. I watch the movies just to watch her laugh. उसको हंसते देखने के लिए हम फिल्म देख लेते हैं कि चलो ये हंस रही है, चलो. All right. I'm not interested in the film. I'm interested in watching her laugh, the way she laughs. She laughs so much when she sees a funny scene, remotely funny, a little bit funny, okay? But she enjoys it. Okay. Now, next. I was very tired. So I went to bed. I was very tired, so I went to bed. I didn't do my homework. अगला लाइन ऐसा हो सकता ना? I was very tired, so I went to bed and I didn't do my homework. Any problems? Okay. ये समझ में आ गया क्या अरसलान बेटा? अगर ये भी नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. हमारा सदाकत आज नहीं आया लगता है, ठीक है? उसको भी ऐसी मुश्किल होती है बहुत सी चीजों में, ठीक है? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं, बने रहो मेरे बच्चे. ये क्लास नहीं, अगले क्लास में, ठीक है? ट्रांसफर इज पॉसिबल, राइट? मैं आपको दूंगा मौका दूसरे क्लास में सीखने का, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लापरवाही नहीं कर रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंस. You are struggling because of your own weaknesses. I will support you. If you are laparwa, then I will not support you. Okay. I was very tired, so I went to bed. The little boy was excited. The little boy was excited because it was his birthday. ठीक है? The little boy was excited because it was his birthday. Okay. अरसलान बेटा, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? किस चीज के बारे में बात हो रही है? इस बात को हमें हिंदी में कैसे बोलना होगा? The little boy was excited because it was his birthday. हाँ, थोड़ा सा ध्यान दे दे बेटा. लिटिल बॉय जो था ना, छोटा सा बच्चा था एक, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. The little boy is no excited, was excited because it was his birthday. क्योंकि उसका बर्थडे था. Was his birthday. Is his birthday? No. अगर हमने कहा Sachit is very excited today because it is his birthday today. तो है ना? Is. तो थोड़ा सा ध्यान देना. Was past, is present. I'm interested in modern art. I'm interested in modern art. I'm interested in modern art. So I love the exhibition. Exhibition is a place, beta, an event where they show paintings. Okay, and that place is called an exhibition. That event is called an exhibition. Okay, and the place is called art gallery actually. The place is called, and the event is called exhibition. जो लगा होता है ना, उसको कहते हैं exhibition लगा हुआ है. जैसे मेला लगा हुआ है, तो मेला क्या है? इवेंट है, जगह नहीं है मेला. उस जगह का कुछ और नाम होता है, लेकिन जो हो रहा है उसको कहते हैं मेला, राइट? तो वैसे जगह का नाम है आर्ट गैलरी, और जो हो रहा है वहां, वो बिहार में ना आर्ट गैलरी ना एग्जीबिशन होता है. थोड़ा मुश्किल है समझना, बट इमेजिन करो, देयर इज अ बिग बिल्डिंग एंड पीपल आर गोइंग देयर टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स. ठीक है? तो वो पेंटिंग्स को क्या, जो इवेंट अरेंज किया ना ये सबको, उसको कहेंगे एग्जीबिशन लगा हुआ है. क्या बोलेंगे? देयर इज एन एग्जीबिशन. ठीक है? एंड इट्स नॉट ऑलवेज अ पेंटिंग, समटाइम्स स्ट्रक्चर्स, स्टैच्यूज, कुछ भी. ठीक है? आर्टिस्टिक चीजों को डिस्प्ले कर देते हैं ना, तो उसी को कहते हैं एग्जीबिशन लगा है. एग्जीबिशन ये बना है वर्ब एग्जिबिट से. एग्जिबिट मतलब शो करना, तो शो कर रहे हैं ना वो लोग, इसलिए उसको क्या कहते हैं? एग्जीबिशन. ओके. So I'm interested in modern art. So I love the exhibition. क्योंकि मुझे तो मॉडर्न आर्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे एग्जीबिशन बहुत पसंद आया, बहुत मजा आया. I love the exhibition. नेक्स्ट बेटा,
Why are you annoyed with me? Why are you annoyed with me? Because you are late again. Your wife or your girlfriend is saying this. You saw her mood is bad. You ask, why are you annoyed with me? क्यों annoyed क्यों? क्या हुआ? आपने कहा कोल्ड कॉफी मंगवाए डार्लिंग? ने कहा जो मंगवाना मंगवाओ. All right. Then you say, why are you annoyed, darling? Right? Why are you annoyed with me? Because you're late again. Look at the time. 5 मिनट में घर जाना पड़ेगा. Okay. All right. All right. तो यहाँ पर कोई है किसका? अरे भाई, जब यहाँ कॉमेडियंस के फैन आ जाएंगे क्लास में, बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्लास. साजिद, मुझे पता नहीं था that you like that guy Raina. What is his name? Samay Raina. Oh my goodness, that guy is so happening. There was Kapil Sharma. Then came Zakir Khan, and now it is time of Samay Raina. Oh my God, that guy and his cute face and the things he says. He has no filter. He says the worst things. Zakir Khan कम से कम गंदी बातें नहीं बोलता मुंह पे, right? But this guy is absolutely, adult content. उसका तुम देख नहीं सकते फैमिली के साथ. But I'm telling you, soon you will have Samay Raina on TV. ऐसे जल्दी होने वाला है. Zakir Khan is already on TV. He has his own show, and soon you will see Samay Raina on TV because people need laughter. हंसते हंसते बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं आजकल. और हंसते हंसते बहुत सारे टॉपिक्स टच कर देते हैं. वो टॉपिक्स जो लोग ऐसे बात करने से कतराते हैं, चलो हंसी मजाक में बोल दिया थोड़ा थोड़ा, इससे चेंज आता है. कॉमेडियंस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी. You know that comedians are very important for a developing society because comedians touch those touchy subjects. Which subjects? Touchy subject. Touchy subject means common subjects or difficult subjects. Difficult subjects, touchy subjects. Okay, उस पे लोग जल्दी घुसा जाते हैं, वो वाले subjects, touchy subjects. They talk about them in a very fun way. Nobody minds. शुरू में कुछ लोग माइंड करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं हंसी मजाक तो कर रहा है. एंड हंसी मजाक करते करते वो चीज के बारे में बात शुरू हो जाती है. राइट. एंड इट्स अ गुड थिंग. अगर आपको डेवलपमेंट पसंद है, प्रोग्रेस पसंद है, इफ यू लाइक द सोसाइटी चेंजिंग, then you would not disrespect comedians. ठीक है, वो कभी कभी they are a little bit vulgar, indecent. Vulgar, you know vulgar? How do you spell vulgar? vulgar, vulgar, right? Sometimes they're a little vulgar. Sometimes they're a little indecent. Indecent. It's the same word as vulgar. Indecent. Okay? Yeah. Sometimes they're a bit indecent as well. But ignore that. They make a contribution to society. And that's why traditional people don't like comedians. Traditional people don't like them. ये आदमी लोग खराब कर रहे हैं समाज को. Okay. Why are you annoyed with me? Because you're late again. You are late again. ये आसान लगा है समझने में सब लोग? Everybody? तो आसान है, उसको दूसरा थोड़ा सा उसमें कुछ और भी ऐड करने की कोशिश करना, हटा करके you are late again. Why is the teacher annoyed? Why is the? Because the students are late. Because the आपने नया सेंटेंस बोला है, आप यकीन माने. ठीक है, आपने नया सेंटेंस बोला है. ठीक है, वहां सिर्फ सब्जेक्ट बदल दिया. यू की जगह कह दिया व्हाई इज द टीचर अनॉयड? बिकॉज द स्टूडेंट्स आर लेट. ओके. ओके बेटा, नेक्स्ट. आई एम वरीड बिकॉज इट्स 10 p.m. and the children aren't home yet. I'm worried because it's 10 p.m. and the children aren't home yet. यार हमको तो थोड़ा टेंशन हो रहा है. I am worried. इसकी हिंदी ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, अब तुम बोलोगे मैं चिंतित हूं. ऐसे कोई बात करता है क्या? इस जगह पे जैसे माहौल है कि किसी के बच्चे घर नहीं आए, 10 बज रहा है, तो औरत क्या बोलेगी अपने हस्बैंड से? हमको ना टेंशन हो रहा है, 10 बज गया है, बचपन लोग घर. ऐसे ही ना हम लोग को बोलने से पहले इंग्लिश थोड़ी देखना, समझ में आ गया है क्या बोला गया है. भाई 10 बज रहे हैं, बच्चे घर नहीं आए, माँ परेशान है. यार हमको तो टेंशन हो रहा है, माँ बोल रही है, पिता बोल रहे हैं, कोई बात नहीं. यार बच्चा लोग अभी तक घर नहीं आया है, 10 बज गया है. सारे देखो इंग्लिश में कैसे बोल रहे हैं, कितना आसान है. आई एम वरीड because it's 10 p.m. and the children
aren't home yet and the children aren't home yet. और बच्चे अभी तक घर नहीं आए, the children aren't home yet. अभी गौर करना सारे वर्ड्स पे। आई एम वरीड, हमको टेंशन हो रहा है। ट्रेडिशनल पढ़ाई जो होती है बेटा, वो सोचेगा ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और आईएनजी सोचना शुरू कर देगा। हो सकता है बोलते हैं आई एम वरिंग, ठीक है, लेकिन हमें क्या बोलना बेटा, मम्मी को टेंशन हो रहा है, मम्मी इज वरिड, ठीक है। मम्मी को टेंशन हो रहा है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं, मम्मी इज वरिड बिकॉज पापा, देखो देखो घर नहीं आए हैं कैसे बोला है, देख लो यहां से सीख लो, यही होता है फादर के साथ, यही तो सीखा। इसीलिए कहता हूं मैं, आज वहां एक अपने केवाईपी क्लास में मैंने एक इंग्लिश में एक सेंटेंस बताया था कि तुम्हें अगर ऐसे खाली कागज पे एक सर्कल या स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कहा जाए तो मुश्किल है, लेकिन अगर एक सर्कल दे के उसके बगल में सर्कल एक खींचने के लिए कहा जाए या एक लाइन दे के बगल में लाइन खींचने के लिए कहा जाए तो उसका सहारा लेके आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपके वो लाइन है ये जिसका सहारा लेना है आपको, किताब में वो लाइंस आपके सहारा हैं, इनको लीजिए ना, इनका हेल्प लीजिए। क्या लिखा है, आई एम वरीड बिकॉज इट्स 10 PM एंड द चिल्ड्रन आर्ट होम येट। अब शब्दों पे गौर करिए और अपना सेंटेंस, मम्मी टेंशन में है, मम्मी को टेंशन हो रहा है कि पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। तो समझ में आया, 10 बज गया, दीदी अभी तक घर नहीं आई है, सबको बहुत परेशान, सबको टेंशन हो रहा है, एवरीबॉडी इज, देखो एवरीबॉडी, आई एम वरीड है ना, तो तुम क्या बोलोगे, एवरीबॉडी इज वरीड, एवरीबॉडी इज बिकॉज इट्स 10 PM एंड दीदी isn't home yet. Got it? Any problems anyone? क्या बात करो, दीदी घर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है यार, इतने सेल्फिश लोग हैं। नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टूड। एक सेंटेंस का आप अब देखो, तुम्हें टीचर तो बनना नहीं है अभी फिलहाल इस कोर्स के बाद, ठीक है, इस कोर्स से तुम्हें सीखना है। तुम्हें कुछ समझ में आया, कोई अभी तक घर नहीं आया कैसे बोल देंगे, मम्मी अभी तक घर नहीं आई है कैसे बोलेंगे, मम्मी इजंट होम येट। और इसको महसूस करो, मम्मी इजंट होम येट, मम्मी अभी तक, मम्मी घर आ गई, मम्मी, हाँ अगर जो देख रहा है समझ रहा है वो समझेगा, क्या चेंज कर देना बता दो, नॉट हटा दो, मम्मी इज, येट भी हटा दोगे, हाँ हटा दो ना, वो नेगेटिव की वजह से है, अभी तक नहीं आई है, मम्मी आ गई तो येट क्यों रहेगा, मम्मी इज होम, पापा मम्मी इज होम, मतलब ऑलराइट, ठीक है। और शादी नई नहीं होती तो हस्बैंड घर आता है तो अनाउंस करता है, डार्लिंग मैं घर आ गया, तुम कहाँ हो, राइट, तो कैसे बोलेगा वो, डार्लिंग आई एम होम, वेयर आर यू, राइट, ओके, एनी प्रॉब्लम्स, आई एम होम। अब पूरे बिहार शिव को ये लाइन सुनाओगे तो बोलेगा हम घर हैं, ये कौन सा इंग्लिश हुआ, आई एम होम, तुम्हारे सर अनखा के सर हैं, गलत सलत इंग्लिश सिखा देते हैं, तुम लोग सीख के चले आते हो, कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास। आई एम होम मतलब हम घर आ गए हैं, कैसे हुआ, आना कहाँ बोला तुमने, तुम बोलना ना चिल, ऑलराइट, सारे बहस के बाद तुम क्या बोलना, चिल, ऑलराइट, डोंट एक्सेप्ट माय सेंटेंस, क्या बोलना उसको, ये इट्स ओके, रहने दे मुझे अंधेरे में, ठीक है। आई एम होम मतलब, हाँ अनाउंस करते हुए है ना, डार्लिंग आई एम होम, तुम लोग यही बोलोगे ना, ठीक है। हाँ, और लड़कियां, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम क्या बोलोगी, कब आएंगे आप घर, कब आएंगे, कैसे बोलोगे, when will you be home, फ्यूचर, आई एम होम में वर्ब क्या है, बी वर्ब, when will you be home, पूछोगे ना लड़कियां, कैसे पूछोगी, when will you be home, ये कौन सा इंग्लिश सीखे हर तो हर सर, अगर उसका इंग्लिश ठीक ठाक नहीं रहा तो, ठीक है।
अगर ये अच्छा रहा तो तुम्हारी बड़ी इज्जत करेगा, वो बोलेगा I'll be home, I'll be in 2 minutes darling, I'll be home in 2 minutes, okay, yeah. हम घर पहुंच जाएंगे ना, तुमको कॉल करेंगे, I'll call you when I am home, I'll call you when I'm home, okay. Any problems anyone? पक्का? तो ये सेंटेंस उन लोगों के लिए नहीं है जो हिंदी से इंग्लिश करते हैं और सोचते हैं हम इंग्लिश सीख जाएंगे। ऐसे आप थोड़ा सा इंग्लिश सीख सकते हैं, सिर्फ वो वाला इंग्लिश सीख सकते हैं जो हिंदी से मैच करता है, और थोड़ा सा हिंदी करता है मैच इंग्लिश से, थोड़ा सा इंग्लिश ऐसा है जो हिंदी से मैच करता है, वो वाला सीख सकते हो आप। लेकिन उसके बाद और भी इंग्लिश है, उसका क्या? तो हम लोगों ने वो हिंदी को साइड रखा और कहा कि चलो लेट्स लर्न इंग्लिश, एंड वी हियर वी आर। It's an elementary course, the first course, and we are learning sentences like the children aren't home yet. बच्चे अभी तक, मेरी एक स्टूडेंट है गुड़िया, okay, she is from a village called Bhagwanpur or Bhagwandas, Bhagwanpur, yes, near Pavapuri, okay. Not a girl who was very smart or very good at studies or anything. A typical village girl who could not even speak Hindi very well, you know. तो वो बोला ना सर कि हम नहीं जाएंगे, तो अब हम सोचे अब हम कैसे जाएंगे, this tone. Got it? I'm not doing this to make fun of her. I'm doing this to just let you know what her condition was when she joined. तो पापा ना मना कर दिए, तो हम बोले हम पहले चल जाएंगे, तो हम आगे सर. This actually happened, this conversation. Okay, she walked 2.5 kilometers from Bhagwanpur to Pavapuri to catch the, yeah. So guys, she was very dedicated and a very simple girl, no interest in anything else, just sat in the class. Sometimes I thought कि क्यों ही बैठी है, कुछ समझ में तो आता नहीं उसको. It was 2000 and I think 12 or 13 or 14 उस समय की बात है बेटा, ठीक है, about 10-11 years ago. And that girl sat in the class, elementary course, throughout the course. मैं इससे पूछता था, कुछ समझ नहीं आता था, कोई जवाब नहीं, ठीक है, मैंने कहा बैठो, ओके. बट शी वाज पेइंग अटेंशन. जवाब नहीं दे पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ हो नहीं रहा है. पौधा तभी नहीं बड़ा होता है जब वो जमीन से बाहर है, उसके पहले भी बड़ा हो रहा होता है अंदर में, ठीक है ना. एग्जैक्टली. तो वन डे द कोर्स वाज ओवर, एलिमेंट्री कोर्स वाज ओवर. सर हम दोबारा करेंगे. ओके फाइन, बैठ जाओ. बैठ गई, ठीक है, चल रहा है. नाउ आई सी, वो समझना शुरू कर चुकी है, वो सेंटेंसेस फॉर्म कर रही है. और ये इसलिए खाली नहीं हुआ कि वो खाली बैठी हो, पूरे इंटरेस्ट के साथ बैठ रही. आगे बैठ जाती थी, अब सब लड़ेंगे हम भी आगे बैठेंगे, ऐसा वाला. सबको तो बैठना पड़ेगा किसी को पीछे. बट माई पॉइंट वाज, कुछ लोग डरते हैं आगे बैठने से. डरो मत, पीछे बैठ जाओ, इट्स ओके. बट इफ यू आर आस्क्ड टू सिट हियर, यू शुड फील कंफर्टेबल. जो पीछे बैठ के रिलैक्स करता है और आगे बैठ के डरता है, इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, शी इज नॉट अ गुड स्टूडेंट. सिंपल. आगे बैठने से डर लगने वाले अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते, ठीक है. किस बात का डर भाई बैठने में सिर्फ, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ क्लास, तो एनीवेज, दैट गर्ल, आई एम स्टिल प्राउड. उसकी वजह से मेरे बहुत फर्क पड़ा है, उसके सीखने से मेरे कॉन्फिडेंस पे बहुत फर्क पड़ा कि ऐसी लड़की जो बिल्कुल समझती नहीं थी इंग्लिश, ठीक है, बोलना दूर की बात है, वो भी इंग्लिश में बात करी है. नाउ शी इज मैरिड, शी हैज अ सन, शी इज प्रिपेयरिंग टू बी a police inspector, she wants to join the police force. And she came with her husband a few months ago, with her husband and her baby. And yeah, I'm just saying that her story is very more inspiring because it gave me confidence कि कोई भी यहाँ है तो that person can learn. Okay. अभी भी वो बात करती है ना, तो उसका एक्सेंट बहुत ही वैसा ही रहता है दोस्तों. No, not very smart accent. She doesn't have that. Okay, give me a second. Hey Sabha. Yes Sabha. हाँ गुड इवनिंग. नहीं ऑफ नहीं हुआ है, क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कल 11 बजे वो साथ में लेते चली आएंगी, ठीक है. ओके. ओके.
हाँ, एग्जैक्टली विद द सेम डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो ये पॉइंट सिर्फ इतना है बेटा, कोई नियम ही नहीं है ऐसा कि पानी में हम कंकड़ डालें और पानी का लेवल ऊपर ना जाए। कोई नियम ही ऐसा नहीं कि पानी में हम चीनी मिलाएं और पानी मीठा ना हो। तो ये पॉइंट सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज सीखने की कोशिश की जाए वो ना सीख पाए, ये होता नहीं है। हाँ, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोई कहाँ से शुरू कर रहा है, वो अलग अलग मामला है। तो आप उसके लेवल तक बाद में पहुंचेंगे, हो सकता है आप उसके लेवल तक कभी ना पहुंचे, लेकिन आप अपने लेवल से तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं। That's all we care about. We don't have to compare with anybody else. It's not a competition class. और कंपटीशन क्लास में भी बेचारे जो लोग आधे मार्क्स से छूटते हैं, क्या वो किसी से कम थे? वो तो बस कोइंसिडेंस है कि किसी किसी को आधा मार्क कम आया किसी वजह से। ऐसा थोड़ी कि जिसने क्वालिफाई किया सारे कॉन्फिडेंट आंसर थे, उसके कुछ भी आंसर बाई चांस तो सही होते ही है ना, दो चार। तो हमारे पास जॉब्स नहीं है गवर्नमेंट के पास उतने जितने लड़के हैं। तो लड़कों को फील करा दिया जाता है, भैया तुम सही नहीं थे, तुम्हारा नहीं हुआ। अगर थोड़े से जॉब तुम्हारे होते तो ये भी तो आ जाता उसमें। तो ऐसे एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए हर जगह पे। यू हैव ओनली 100 सीट्स, 5 लाख पीपल आर ट्राइंग, तो 4,99,900 पीपल आर गोइंग टू बी अनहैप्पी इवेंचुअली। आर दे ऑल यूजलेस? तो वी आर अ कंट्री ऑफ यूजलेस पीपल अगर ऐसा है तो। अगर कोई उनको यूजलेस कहता है जस्ट बिकॉज दे डिडंट गेट द जॉब, अगर कोई उनको यूजलेस कह देता है जस्ट बिकॉज दे डिडंट गेट द जॉब, लोग कहते हैं यार ये कंपटीशन वाले लोगों का सोच अलग है। निकला तो हीरो, नहीं तो जीरो, क्या मतलब है? नहीं निकला तो भी हीरो हो सकता है वो, ठीक है। और जिसका निकल गया वो भी जीरो हो सकता है अगर एटीट्यूड उसका सही नहीं है तो लाइफ में। जस्ट गेटिंग अ जॉब इज नॉट एवरीथिंग अबाउट लाइफ। ये हमारा डिस्प्रेशन शो करता है कि जॉब हो गया तो सब कुछ हो गया। डोंट यू सी पीपल विद जॉब कमिट सुसाइड? व्हाई? इफ जॉब वाज एवरीथिंग देन yes, it is necessary to get a job, but understand the situation we have in society, in our country. 5 lakh people try for 100 jobs only, and it is true. Okay, I'm not exaggerating. I'm not, yesterday I used this word, I'm not exaggerating. हम बढ़ा चढ़ा के, I'm not, all right, you believe me, right? This is the situation. So yes, you're lucky that you are successful, and those who are not successful, not just because they are not hardworking. अगर मुझे हार्डवर्क के लिए किसी एक स्टूडेंट को पूरे अपने करियर में किसी एक को देना होगा, तो आई गिव दैट टू दैट गर्ल। गुड़िया, आई टोल्ड यू, भाई वो लड़की है जो डिजर्व करती है। नो फ्रेंड्स, नथिंग, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पावरपुरी एवरी डे, टेकिंग द बस। नॉट दैट शी वाज लिविंग इन बिहार शरीफ। कितनी भी बातें मेरे बारे में हुई, ठीक है ना, बट दैट गर्ल नेवर चेंज हर ओपिनियन अबाउट मी। व्हाई? बिकॉज ऑफ हर इंप्रूवमेंट। कहते ना, आप किसी को सही जगह पे आप मोटिवेट कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, वो आदमी आपके बारे में बस उसी चीज को देखता है। शी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग अबाउट मी। आप कुछ भी बोल दो उसको जाके, विनय सर ऐसे वैसे, बोलेगी ठीक है होंगे, आई डोंट केयर। विनय सर ने दूसरे का 4 लाख रुपए रख लिया, हाँ वो कोई बात नहीं, हमारे लिए ठीक है, बिकॉज आई लर्न इंग्लिश विद हिम, दैट्स ऑल। सिंपल एटीट्यूड। बिकॉज उसको मतलब नहीं है मेरे से वो 4 लाख रुपए मैं उसका लूंगा नहीं कभी, तो उसको क्या टेंशन। मैंने किसी का रखा है, हो सकता है सच, हो सकता है झूठ, शी डजंट केयर। तो आप लोग भी वही कोशिश करिए मेरे साथ बनाने की। आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर इंग्लिश, आई कैन डू दिस, ओके, आई कैन मेक इट इजी फॉर यू। अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप जब जा रहे थे दूसरे डायरेक्शन, मैंने क्या कहा, सेंटेंस को देखो बेटा, द चिल्ड्रेन आर्ट होम येट, तो बस हो गया। दीदी इज नॉट होम येट, पापा इज नॉट, और हम घर आ गए हैं, आई एम होम। अच्छा, बोलने का टोन समझना, आई एम होम, हाँ आई एम होम, या हम आ गए, आई एम होम, ओके। नहीं 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 नहीं, देखो यही हमारी सबसे बड़ी खराबी है। अगर ऐसा होना होता तो फिर कोई स्ट्रक्चर होता ना। ये है होम का फेल। एक होम का लेसन था, इंग्लिश का लेसन नहीं है, होम का लेसन। अगर इंग्लिश का कोई रूल होता तो होता आई एम क्लास, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तो लड़के परेशान होंगे जो हिंदी वाले हैं।
क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ सिर्फ किसके केस में है, होम के केस में। अब जब जब बात निकली है तो मैं आगे थोड़ा सा डिटेल देना चाहूंगा, जो कि तुम्हें चाहिए नहीं लेकिन फिर भी दे देता हूं। ये सारे सारे वर्ड जो हैं, होम, स्कूल और क्लासेस, सिर्फ नाउन्स हैं, एडवर्ब नहीं है। होम एक नाउन भी है और एक एडवर्ब भी है इंग्लिश में। अब मैं समझाता हूं। हियर इज एन एडवर्ब, HERE, यहां। एडवर्ब ऑफ प्लेस, डू यू रिमेंबर? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एवरीबॉडी। एडवर्ब ऑफ, and please, why is Deepak not coming to class? Is it because of KYP or what? Is he? I don't know. Talk to him, Rudra, and find out why he's not coming to class, and tell him that he must be here. Okay, if it's necessary. I mean, whether he joins KYP or not doesn't matter. वहां के लिए इंक्वायरी शुरू हो चुकी है दोस्तों, वहां लड़के बढ़ना शुरू हो चुके हैं। मैंने बताया कि अगर मैं ऑफ टाइम दे रहा हूं तो किसको नहीं पसंद आएगा कि हमें सर से पढ़ने का मौका मिले, वही बिना पैसा दिए थोड़ा बहुत। ठीक है, of course I cannot spend 90 minutes for a class, and I will only teach as long as the KYP course lasts, because I'm doing it for KYP. Otherwise it will be injustice to you कि आपसे पैसे लेके पढ़ाऊं और किसी को फ्री में पढ़ाऊं। समझ रहे हो ना? ऐसे ही तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगा आपके साथ। फिर आप कहेंगे मेरे साथ क्यों, मेरे को भी फ्री में पढ़ा दो। ओनली फॉर KYP ड्यूरेशन आई विल टीच। ओके, जो वहां का है वो देंगे। ऐसा नहीं है कि आई विल मेक दिस कोर्स फ्री, फिर तो गलत हो जाएगा मेरे उन बच्चों के साथ जो बेचारे पैसे देके पढ़ते हैं वैसे तो ना। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं करना है, आपको करना है अगर आपको जरूरत है तो। नहीं जरूरत है, जैसे मैंने बताया था, मेरी मेरी जरूरत थी कभी एडमिशन की, अब धीरे धीरे वो खत्म होने वाले, टेंशन ना लें। वी हैव ऑलरेडी अरेंज्ड द स्टूडेंट्स। ओके, तो थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग ऑलरेडी। अब जब इतना बढ़िया कोर्स, इतने बढ़िया फैकल्टी और वो सब चीज फ्री में, तो फिर किस बात की प्रॉब्लम होने वाली है? मुझे थ्योरी में नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बस एक चीज का प्रॉब्लम है, फाइटिंग द नेगेटिव रेपुटेशन ऑफ द कोर्स। वो चेंज हो जाएगा, कोर्स का रहेगा अब वो इंस्टीट्यूट का बन जाएगा रेपुटेशन, वो कोर्स की जगह क्या बन जाएगा। हाँ, क्योंकि वही कोर्स दूसरे इंस्टीट्यूट में बेहतर हो रहा है, तो कोर्स बुरा नहीं है, इट्स द प्लेस, है ना? इंस्टीट्यूट बुरे हैं इसलिए वो नहीं कर रहे अच्छे से। बस ये चीज साबित करना धीरे धीरे। एंड इट इज ट्रू, द कोर्स इज नॉट बैड, इट इज द इंस्टीट्यूट दैट आर नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ द कोर्स प्रॉपरली। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि कोई भी थोड़ा भी प्रेशर फील करे। ठीक है, एवर सिंस आई टॉक टू रुद्र एंड यू, रुद्र एंड दीपक, ही हैज बीन एब्सेंट, सो आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स, आई एम कनेक्टिंग द, समझ गए इसका मतलब? ये इडियम है, आई एम कनेक्टिंग द। He didn't tell me anything, but the day I told him that next day you have to take admission, since that day he's absent. And he has not informed me that he is not coming or something. Normally, people do that, okay? Even in the group, there is no information. So that's why I'm joining the dots. I'm connecting the dots. It's a good quality to connect the dots. Some people can't connect the dots. Yeah. Well. Of course, I hope that there is a reason. I hope this is not the reason. I'm connecting the dots, but sometimes you connect the wrong dots. Sometimes you connect the, समझ में आया? इंग्लिश में ही बोल दिया कि नहीं आप गलत सोच रहे हैं। यू आर कनेक्टिंग द रॉन्ग डॉट्स। ओके, वेयर वर बी? सो होम इज एन एडवर्ब बेटा, जैसे आप बोल सकते हैं आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर, तो वैसे आई एम होम, बिकॉज होम इज ऑल्सो एन एडवर्ब। इसका ऐसे एक्सप्लेनेशन हो गया ग्रामर के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे भी जाहिल होंगे जिनको ये लाइन अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो वो कह देते क्या ना कि अरे वो स्पोकन इंग्लिश टीचर है ना, तो स्पोकन इंग्लिश में चलता है, ग्रामर से सही नहीं। तो मैंने समझाया कि ऐसी जो भी in one line, the quality of English that you will get here is unparalleled. चाहे कोई कितना भी कुछ फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ता। The quality of English that you will get here is simply unparalleled. It cannot be compared to anybody in your town, in your state, in your country teaching you. तू दिल्ली चले जा भाई, ठीक है, मुखर्जी नगर में जाके बैठ के पढ़ाई कर, nobody will teach you the stuff that you will learn here. As simple as that.
अब ये बात तो अलग है, रेपुटेशन को फाइट करना इज ऑलवेज अ चैलेंज। मुखर्जी नगर हैज अ रेपुटेशन, भाई वहां तो बड़ी पढ़ाई होती है, ऐसे टीचर होते हैं, वैसे टीचर, तुम तो एक छोटे शहर के टीचर हो। यू नो, कैन आई शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू? I have a student, I don't know if I have shared this story with you before. I have a boy in my neighborhood, and that guy, he stayed in the Mukherjee Nagar, studied English, and because he has seen me growing up and everything. I mean, he grew up in front of me, mahalla ghar ki burgi dal barabar type. He doesn't look at me as a teacher. People tell him that Vinay sir is a good teacher, and he says, मेरे घर के बगल में रहते हैं तो कहाँ बड़ा है ऐसा वैसा. Because he sees me shouting, he sees me quarreling. मेरे घर में सब कुछ होता है, झगड़ा लड़ाई सब होता होगा, तो वो सब चीज देखता है, तो उसके नजर मैं टीचर नहीं हूँ. For you guys, I'm a teacher now. तो यू गाइज टॉक अबाउट मी डिफरेंटली. और उसको जो मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो उसके दोस्त हैं, तो ही फील्स लाइक क्या ही बड़ा बात है, ईगो, बगल में रहने की वजह से कि भाई क्यों माने, अच्छा. तो बट स्टिल मुंह पे तो नहीं ना, तो हाँ भैया, हाँ भैया, ही कॉल्स मी भैया ऑफ कोर्स, ओके, समटाइम्स सर, मोस्टली भैया. तो आई डोंट नो, मे बी ही मेड सम कमेंट लाइक दिस कि हम तो मुखर्जी नगर ये वो, तो यहाँ तो टीचर नहीं है भैया, बुरा मत मानिए, ऐसे. मैंने कहा बेटा ऐसा, मेरे सामने? मैंने कहा रुक रुक रुक, मुखर्जी नगर में बेहतर टीचर यहाँ नहीं. भैया आपके बारे में नहीं बोला. मतलब अरे रुक जा एक सेकंड, भैया आपके बारे में नहीं बोल रहे, लेट्स कंपेयर. आई गेव हिम 4-5 क्वेश्चंस. यू आर इन टच विद योर टीचर्स? यस, ऑन व्हाट्सएप ऑल द टाइम. मेरे तो स्पेशल टीचर्स हैं, अच्छे क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मेरा तो बना है सर को हम किसी से मैसेज करेंगे, ही विल रिस्पॉन्ड. मैंने कहा बहुत अच्छी बात. आई गेव हिम अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, योर एलिमेंट्री कोर्स, सेंटेंस लाइक दिस. मैंने कहा जरा बात कर ले भाई. जवाब आया. मैंने उसके बाद उसको खाली अपना आंसर नहीं बताया, बिकॉज ही वुड नॉट टेक. जैसे मैं अगर उस लड़के को बोलूँ ना आई एम होम, उसको नहीं, ये तो गलत इंग्लिश, ऐसा सोचेगा वो, ईगो उसका रोक लेगा. तुम लोग कितनी आसानी से समझे. उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया, होम इज एन एडवर्ब एज वेल, ग्रामर इसका ये है, जैसे आई एम हियर, राइट, वैसे ही आई एम होम. और एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है, प्रैक्टिकल करेक्ट ग्रामर, ग्रामेटिकल इंग्लिश. ये नहीं कि जैसे मैंने बताया ना कि कुछ लोग कहेंगे स्पोकन इंग्लिश. नो 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 नो, इट्स करेक्ट इंग्लिश, ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. तो व्हेन ही I exposed his teaching there, the teachers that he has. भाई मुखर्जी नगर हो चाहे कुछ हो, in English, no, no, not at all. I am not a teacher for Indians only. I am an international teacher. I have students from other countries, and I can't teach them if I'm not good. It's not possible. हिंदी इंग्लिश के गुलाम जो है ना ऐसे ऐसे करने वाले, वो इटालियन और रशियन के सामने बोलेंगे, हम बताएं कैसे उसको इसका मतलब, उसको तो हिंदी ये भी नहीं करता. I have to explain what this sentence means in English so that that person understands. So explaining English in English, that's important. So that's what I'm saying. कोई किसी कीमत पे unparalleled English, no matter. हाँ, मेरी personality पे जितनी बातें बोलनी बोल लो, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा वैसा सोच है, I will take all that because I understand that most people don't agree with my personality. It's okay. My thinking, I'm okay with that. I'm a lonely person anyway. Okay, no issues. I'm fine alone. And but when it comes to English, no questions, not at all. Yes, you can say whatever you want to say behind my back about English, but if you say anything in my face, I'm gonna expose you because I have worked for this stage, okay, this level. It's not a gift to me from somebody. Okay, it hasn't just come like this. I have worked hard for reaching where I am. Okay. So guys, let's continue now. I'm worried because it's 10 p.m. and the children aren't home yet. 8. Berlin is a very exciting city. Berlin is a very exciting city. Berlin is a very exciting city. Now, next line. So, now, so to nahi hoga isme. There is so much to do. Berlin is a very exciting city. There is so much to do. Yeah. If somebody comes from another place to your town, how many days can they enjoy this place? I mean, Biharship is not a very exciting city. If you spend 2 or 3 days here, you will know everything about here. And after that, the same thing every day. Right? Biharship is not a very exciting city. Think of Tokyo. Think of New York. Think of Paris. Think of London. Something new every day. All right? Biharship is not a very exciting city. Berlin is a very exciting city.
There is so much to do. There is so much to do. अब आप इसको एसटीसी के बारे में बदल दीजिए, ठीक है? बर्लिन की जगह एसटीसी, आपके दिमाग में आ जाएगा कुछ तो. एसटीसी is a very exciting city. STC is a very exciting place, right? There is so much to learn. बना है, जैसा आपने चेंज किया ना थोड़ा सा, वो आपकी समझ की वजह से हुआ कि आप चेंज करने लायक थे. जो नहीं अभी समझ बनाएंगे उनको भी चेंज करने में टाइम लगेगा. तो इफ यू चेंज इट, ग्रेट. मैंने एक वर्ड कहा था कि भाई रिमूव बर्लिन, पुट एसटीसी देयर. तो आपने जो भी किया, अगर आप चेंज कर पाए, इट मींस यू हैव डेफिनेटली इंप्रूव्ड योरसेल्फ अ लिटिल बिट. ओके, देयर इज सो मच टू लर्न. ओके, you have a favorite cousin, but you haven't met him or her for, let's say, 2-3 years, and finally you are meeting. So you will say, I'm very excited. Because exciting or excited? हाँ, मैंने जानबूझकर पूछा था क्योंकि यहाँ एक्साइटिंग था. देखते हैं कौन हंसता है. एक्साइटिंग बोलता है, एक्साइटेड बोलता है. Berlin can be exciting, this class can be exciting, but you, okay, so I'm very excited, feeling, yeah, great. There is so much to talk about. There is, क्योंकि 2-3 साल बाद मिल रहे हैं, तो there is so much to talk about. ये आसान लगा? पैटर्न वही है. There is so much to talk about. Next बेटा, number 9. The party was very interesting. The party was very interesting. I met a lot of interesting people, nice people. I met a lot of nice people. No problems? Okay. Now let's move on to number 2. Complete the sentences using each adjective once. Number 1. I like the Times because it is an interesting newspaper. I like the Times because it's an interesting newspaper. 2. I don't want to watch the football. I'm not interested. I like the Times because it's an interesting newspaper. Okay, do you find any newspaper interesting? I don't. I don't find. When I was young, because my knowledge was also limited, so I read the Times of India, and especially the Sunday Times. Okay, the Times of India Sunday edition is called the Sunday Times. Okay, I love that. You know, I always waited for the Sunday newspaper. And there were interesting stories always. I'm talking about English, newspaper. Hindi newspapers only talked about film stars and boring things, actually. Once I started reading the English newspaper, then I realized that Hindi newspapers were boring. Before that, ऐसा समझो ना कि तुम साधारण साधारण आम खा रहे हो, फिर आया एकदम दूधिया मालदा तुम्हारे सामने. All right. And then after that is a baki, oh, theek hai baki. Okay. So that is how it was. But now I don't really feel interested in these things, newspaper and all. I don't read much. I'm more a listening person, I like audiobooks. I like audio, and that's why I spend a lot of time listening to podcasts, discussions, talk shows. I don't read much now. Another reason is my eyesight. I can't see that well like I did when I was young. I need glasses, and I don't like wearing glasses and reading. So I don't read much. I don't want to watch the football. I don't want to learn English. I don't want to learn English. I'm not interested. I don't want to get married. I'm not interested. Okay? Yes. I don't want to talk to you. I'm not interested. Okay? All right, miss. ये होना चाहिए, है ना? You showed interest into a girl and she says, I don't want to talk. Okay, I'm not interested. Okay, I'm sorry. बोल के चल दिया. ये नहीं कि हसीना मान जाएगी. ये नहीं होना चाहिए. ठीक है? लगे रहो मुन्ना भाई. ये नहीं होना चाहिए. Leave her alone. Okay? Yeah. अरे भाई वो सब तो खैर वो सब मतलब जानवर है भाई. बाकी नहीं. बाकी दूसरे फिल्मों से ना कि आज नहीं तो कल कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, हाँ, तो वो वाला नहीं एटीट्यूड रखना है. फिल्मों में वो होता है क्योंकि डायरेक्टर बोल रहा होता है उसको. यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं बेटा. द गर्ल सेड नो, इसका मतलब उसके दिमाग में आया नो. ओनली इन 1000 गर्ल्स 1 गर्ल चेंजेस हर माइंड. 999 गर्ल्स विल नेवर चेंज देयर माइंड. इफ दे सेड नो टू यू, बेटा इज्जत बचाओ और निकल लो.
Okay, never meet her again, never show your face again. अब वो बोले यार some girls are crazy. दिल से बड़ा सच्चा प्यार होता तो आता ना, फिर पागल है वो लड़की. All right? Yeah, some boys, some girls are like this. Okay, कि उसने एक बार मैंने मना कर दिया फिर आया नहीं. ठीक है, तो यही कल्चर खराब है हमारा, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है. अच्छा मुझे बताओ, टू गर्ल्स सेड दिस लाइन, अब उनकी वजह से लड़कों को लग रहा है ऑल गर्ल्स थिंक लाइक दिस, वो जबरदस्ती पुश किए जा रहे हैं. The girls are feeling uncomfortable going out. अब तुम उधर मिलोगे, उसको पता है तो उधर जाने से उसको टेंशन हो रहा है, बिकॉज यू विल अगेन टॉर्चर हर, क्योंकि तुम्हें नहीं पता चल रहा, बट शी इज फीलिंग टॉर्चर्ड. शी इज फीलिंग, योर बिहेवियर इज टॉर्चरिंग, राइट? ऐसा ही बोलना चाहिए ना. अलग बात है कि टॉर्चरिंग की जगह हमारे पास एक और वर्ड है, टॉर्चरस, लेकिन यू फील टॉर्चर्ड. ठीक है, तो ये सब चीजें बताई जाने की जरूरत है. मुझे पता है आपको कोई नहीं बोलता. कब हुई ये बातचीत आपके लाइफ में आखिरी बार, मुझे बताना, जो अभी मैंने बोल दी बात पहली बार. यही प्रॉब्लम है. यू नीड मोर पीपल लाइक मी इन योर लाइफ, जो बार बार ये बातें उस उम्र से डाले जब आप 12-13 साल की उम्र में हैं, ताकि आपके सोचने के नजरिए में थोड़ा तो फर्क आए. जो सुनोगे वो सीखोगे ना. दैट्स हाउ इट इज. हमें लग रहा है इट्स ऑल गेम, मे बी फॉर सम गर्ल्स, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स, अरे भाई इट्स अ फीलिंग, शी डजंट हैव इट फॉर यू. Okay, ignore it. Don't force her. You look stupid when you do that, actually, when you force a girl. But again and again you meet her. Why not? What's wrong with me? Don't ask such questions. Because of such boys, some girls can't go out because उनके पेरेंट्स कहते हैं ऐसे ऐसे लड़के हैं रास्ते में, तुम नहीं जाओगी, अब देखो और बंधन. तो somebody is paying the price because of your stupidity. और ये सब फिल्म है. अक्षय कुमार, he enters, he's a stranger, and he enters a wedding party. A girl is dancing, a pretty girl, and he goes close to her and he makes a physical contact. He, pinches her stomach. Stranger, ये क्या है? Sexual harassment नहीं है ये. If you are walking down the street and if a guy makes any physical contact with you without, your permission, isn't it harassment? Girls, is it something you can appreciate? No matter how good looking that guy is, you're not going to appreciate it. So, जाहिर सी बात है, हमें समझना होता है इन सब चीजों को. बट अगेन सब चलता है. Yeah. But yeah, if you want to show interest, smile. That's all you do. Somebody will smile back, means yes, okay, you can go for the next step, talking. There is a process. Number 3, you look bored. You look bored. Don't you like Oprah? You look bored. Don't you like Oprah? I hate politicians. They are so boring. Politicians are boring. Spending time with them is boring. मेरा ये रिकॉर्डिंग कभी किसी पॉलिटिशियन के सामने मत चलाना. Actually, I've had a few opportunities to be with a few politicians. I really didn't enjoy my time. They always have such high opinion of themselves. They won't allow you to say anything. They keep talking. Egoistic people, majority of them. And those who are around them, ji sir, ji sir, ji sir, ji sir. Hooray, we are on holiday. I'm so excited. Number 6, it's very exciting when you go abroad for the first time. When you go abroad, Videshana, when you go abroad for the, I'm still waiting for my chance. 7, she eats with her mouth open. She eats with her mouth. It's very annoying. She eats with her mouth open. It's very annoying. 8, I get very annoyed when people don't say please or thank you. When people don't say please or thank you, I get very annoyed. Yeah. Number 9,
The news is very worrying. It's all about war. The news is very worrying. It's all about war. Yep. Yep. True. The news is very worrying. Tension dene wala news, worrying news, right? Yeah. And I am worried about the exams next week. So exercise 7 was easy. Spend 5 minutes practicing the sentences with a partner. You know, you have to practice the sentences. अभी ये नहीं होगा कि आप बोलेंगे the concert was boring, आप बोल के छोड़ दिए तो दूसरा बोलेगा so I left before the end, क्योंकि ये दोनों लाइन तो एक ही इंसान के हैं. इतना तो एहसास है आपको, फिर दो टुकड़ों में क्यों बांटा? आप ही बोलो पूरा the concert was boring so I left before the end, ताकि आप महसूस करो. अब आप आधा लाइन आप बोल दिया, दूसरे को बोला तू बोला था, क्या मतलब? ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए और बी में बटा हुआ है. नहीं, ऐसा मत करना. ओके, be genuine with your practice. Okay, practice in the most natural way. So with a partner, just go through the sentences with a partner. Everybody with a partner, go through the sentences. Two people there, two there. Yeah, two, 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 and you two are practicing with each other. Those two there. Okay. Please find a partner. Then if nobody has a partner, we have here, Inzamam. Inzamam can be your partner too. Come on, guys, start your practice. You two together? Yep. Yeah, all of it. All of it. Yeah, 1 and 2 both. Inzamam, beta, I think you should go back and practice. You can practice with another person there. Yeah. Okay, go back and practice. Yes.
used for something special. एक वर्ड मैंने यूज किया था जिसका मतलब था स्पेशल. अन रिमेम्बर, अन उसके बराबर कुछ नहीं हो सकता. अनपैरेलल, पैरेलल कहते हैं समानांतर. Unparalleled, okay? Means nothing can go parallel to that. Unparalleled, right? ये सब वर्ड कैच करना है तुम्हें और दिमाग को एक्नॉलेज करवाना है. दिक्कत क्या होता है ना कई बार कि हम लेजी होते हैं, सुनते हैं थोड़ा थोड़ा एक्नॉलेज करना है. अनपैरेलल. आपसे आपको मेरे से वोकैबुलरी सही करनी है अपनी. मेरे को सुन सुन के अपनी वोकैबुलरी सही करनी है. कब? जब मैं कुछ वर्ड दूं आप उसको एक्नॉलेज करो या छोड़ दो. तो फिर आप समझ जाओ कि आपकी वोकैबुलरी में बात करते करते इंप्रूव कर सकते. आपको स्पेशल मेहनत नहीं करना, बस खाली एक्नॉलेज करो. इंग्लिश हियर इज अनपैरेलल. ओके, द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश इज अनपैरेलल. ओके, ठीक है. तो ऐसे करके आप बस, कोई ग्रामर मुश्किल नहीं था. द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश हियर इज. लेकिन अनपैरेलल वर्ड आपने कभी नहीं बोला होगा बातचीत में. कभी नहीं, उसको कभी नहीं, कैसे बोलेंगे? अभी आसान लग रहा है. क्या किया आपने मेहनत? अरे सुना गौर से मुझे. मैं ये तो कहता हूँ ना, मैंने कहा था बेटा आपको कि मेरे सामने बैठो, मुझे एक खूबसूरत लड़की समझो. भले ही मजाक बोलता हूँ लेकिन सच्चाई है कि आपको वैसे ही ध्यान देना होगा. नहीं सर, खूबसूरत लड़की की बात पे ध्यान नहीं देता हूँ. तो बात पे ध्यान देना है. ओके, यस. रुद्र, क्या कह रहे थे? ये इसकी प्रॉब्लम है, मेरे से बोलता नहीं है. इतना इतना हम इसको सपोर्ट करते हैं फिर भी नहीं बोलता है. क्या रुद्र है? हाँ, वो तो मुझे पता ही है, मैंने खुद ही कहा. तो लेकिन अब इसको छोड़ दिया जाए वहां तक. ठीक है, चलो. एक कहते हैं ना बेटा, लीव समथिंग फॉर इमेजिनेशन. लीव समथिंग फॉर, इसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में? कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए इमेजिनेशन के लिए. अगर आप सब कुछ मुंह से बोल दोगे, इट विल बिकम इनडिसेंट, वल्गर एंड नॉट एक्साइटिंग. ठीक है. ओके, लेट मी टेल यू, just for the sake of argument, there is a photo of a girl with no clothes on. Okay, and there is another photo on the other wall. Okay, there is a photo of a girl. She has some leaves on her body. Leaves, पत्ते. Some leaves on her body. आप मुझे बताएं, ज्यादा लोग कहाँ खड़े होकर देख रहे होंगे फोटो पे? नहीं, गलत आपकी सोच है. आप शायद बिहार में रहते हैं, आप शायद डेस्परेट, इसलिए आपने कहा द फोटो व्हेन द गर्ल हैज नो क्लोथ ऑन. ना ना ना, इट्स रॉन्ग. आप करके देख ले एक्सपेरिमेंट. मे बी इनिशियली, but in the long run more people will be looking at this photo where there are some leaves on the top, because that photo leaves something, कुछ चीजों को छोड़ देता है for imagination, and here there is nothing left for imagination. आप इसका ऐसे देखें कि there are lots of those films, but they never become that brilliant. लेकिन कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं. There is a movie, getting the name. It was a blockbuster across the world. Yeah, because again they touch some certain topics, but in इंसान की फितरत है, if you leave something for imagination, it's more exciting. इसलिए मैंने बात को वहीं छोड़ दिया था. बाकी आपके दिमाग में है, स्पिट आउट नहीं करना है, ब्लर्ट आउट नहीं करना, मुंह से नहीं बोलना है, वो इनडिसेंट होगा. और यकीन मानिए, अगर आप उसी में खुश होते हैं, यू नीड टू चेंज इट. थोड़ा सा पब्लिक प्लेसेस, आप अकेले में आप कैसे हैं मुझे कोई मतलब नहीं. ऑलराइट, आई हैव नो इंटरेस्ट हाउ यू आर इन योर प्राइवेट पर्सनल लाइफ. लेकिन पब्लिक लाइफ में, when we are having a conversation, we can talk about everything in a way that is okay. Okay, exciting. It can be like, you can see the kind of things I say. आप महसूस कर चुके होंगे, मैं कोई भी टॉपिक नहीं छूता, सब नहीं, सब टॉपिक छू देता हूँ, राइट? लेकिन इन अ वे दैट डजंट ऑफेंड एनीबॉडी अनलेस दे आर वेरी वेरी ट्रेडिशनल. क्योंकि मैं कुछ मुंह से नहीं बोलता. आई लीव अ लॉट फॉर इमेजिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. When I said, और ये मैंने ये चीजें इंग्लिश सीखने के दौरान सीखी है. When English people speak English, they have a lot of humor in their sentence. जैसे मैंने कहा था, okay, but आप कहेंगे कि sir, I don't look at the girl's face. तो इतना ही तो बात था, उसके बाद छोड़ देना था, और मैंने छोड़ दिया.
और आपको भी यहीं पे छोड़ना था, गॉट योर पॉइंट, बस इतना ही, ओके। बस इसको कहते हैं, फिर आप अकेले में जैसे भी इंसान है, इट डजंट मैटर, व्हाटएवर यू लाइक, इट्स योर पर्सनल लाइफ, आई एम नोबडी टू मेक अ कमेंट, ओके गाइस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। अभी एक दिन और मिला, 24 मोर आवर्स, किस काम के लिए? टू लिसन टू दैट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन कॉन्वर्सेशन। मैं चाहता हूँ और अच्छे से सुने आप इसको, एंड टुमारो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। अरसलान बेटा, डू यू हैव योर फोन विद यू? Do you have your phone? Take my number. Take my number. 93085650667। मुझे व्हाट्सएप भी करिए बेटा और टेलीग्राम भी करिए। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और वहां कुछ कुछ ऑडियो फाइल्स होंगी, तो घर पे जब मन आए सुनना हमसे थोड़ा थोड़ा, ओके।